The screen is again visible, na? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So any key means during identification, whenever we are, whether me or you or any person, whenever he has some n number of specimen and he have to identify or she have to identify the specimens, so they need some literature that containing a opposite or contrasting characteristics of the specimens were clearly mentioned in a key that is called as taxonomic keys. Okay, that means these are a literature which contain contrasting characteristics of the groups or the families so that you can identify a particular species. Okay, a taxonomic key consists of hierarchically arranged diagnostic information that present alternatives with reference to features of various taxa. That means they are the identifying or striking or the diagnostic information with contrasting characteristics of other similar specimen. Okay. Suppose one specimen has 12 dorsal fin rays, another specimen of more than 12, less than 12. Okay. Clear? The main objective of a taxonomic key is to separate and segregate characters in such a way as to provide a series of alternative choices. By comparing an unidentified specimen feature by feature with key couplets, one gradually eliminates all the non-agreeing subgroups and arrives at one which agrees. That means whichever we will see each and every features and we will eliminate one group, one specimen like that, and finally we can conclude that okay, this is that particular specimen. A key may or may not reflect the ideas of evolutionary or phylogenetic relationship. From a key, it may or may not, we can check or we can validate the evolutionary relationship. Okay. So this the very basic key is called as dichotomous key. Okay. Please note down these things. Whenever you any points you need to write, please ask to stop and please note down. A dichotomous key is a tool that allows the user to determine the identity of items in the natural world based on the items characteristics. Die means two divided into two parts. Dichotomous keys always give two distinct choices in each step. Often they are opposites. That means so many examples are there. Whether the body is deep, whether the body is slender, whether the one has pectoral fin, one has no pectoral fin. That means they are the contrasting characteristics. One specimen have spots in their body, another specimen have no spots. One have premaxilla, another one is no premaxilla. These all are the contrasting characteristics. From this we can conclude, okay, our specimen is this specimen. This is for easy identification. Okay. Dichotomous means here we are using the contrasting characteristics and the distinguishing characters, and we identify a particular specimen. सर दैट में से एक्सटर्नल कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के इंटरनल कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Your voice is not clear. Please repeat.
सर एक्सटर्नल कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करें कि इंटरनल कैरेक्टर को? No, generally classical taxonomy deals with external morphology. Okay, morpho and Okay. meristic. From external Okay, features, we are identifying the specimen. Okay, thank you, sir. So here one example it is given: body elongate, tail long, tapering, caudal fin not forked, upper pectoral ray produced as long filaments. This is one characteristics: body elongate, tail long, caudal not forked. The contrasting characteristics is body moderate, caudal forked, and pectoral ray are normal. In their upper pectoral are filamentous, here pectoral are normal. So these are the contrasting characters. If this character is there, body elongate, tail long, no caudal forked, normal caudal, tapering caudal, okay, and upper pectoral filamentous, from there we can say that it is one specimen called as coelia. Okay, if it is not there, सर हाँ, सर जो पिछले एग्जांपल में दिए थे सर, गुड और इविल, तो सर वो तो ना ही इंटरनल ही एक्सटर्नल सर है, तो कैसे होगा सर एग्जांपल? that is normal, ऐसे दिए तो वैसा नहीं होता है, ठीक है, this is on just general example. यस सर, थैंक यू। So if the caudal is forked, body is not tapering, so we have to go to number 2. Again, here two things is there: prominent silvery lateral stripe or no lateral stripe. Okay, like that we have to identify. If 2 is not there, then we have to go 3. If 3 is not there, then again we have to go 4. Like that we have to identify the specimen. So this is, see, there all are the contrasting characteristics, distinguishing contrasting characters. So this key is called as dichotomous key. Okay. सर हाँ, जो फर्स्ट भी कोयलिया का दिया है ए और बी, वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हुआ, फिर सेकंड में स्ट्रेप्टोलेफोरस का दोनों अपोजिट है, ऐसा है ना? suppose in point number 1, A or B, A and B are opposite. If A is not there, then we will see the B. If B is matching, okay, generally one will not match, second one will match. Okay, if B is matching, then again we have to go number 2. In 2 there are 2A and 2B. If 2A is there, that is one species called as Stollephoros. Okay, if it is not silver stripe, then we have to go to number 3. Again in number 3, they are upper pectoral produced and upper pectoral not produced. Like those, upper pectoral produced means upper pectoral filamentous or upper pectoral not filamentous. So like that we have to see the keys. In practicals, in practical, I will provide you the key. अगर तुम्हारा ऑफलाइन प्रैक्टिकल्स होता है ना, तो तुम्हें हम लोग 10 स्पेसिमेन दे देंगे और की दे देंगे, तुम्हें उस की से हर एक स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करना होता है. ओके, ग्रुप वाइज की आर अवेलेबल. तो कीज का कोई ऑर्डर भी होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर फिर लीस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर करके? नॉट मोस्ट, देयर इज नो, nothing is more important or less important. They are the contrasting characteristics. No characteristic is less important. Either if it is not contrasting, generally we are not taking for key generation. Key generation is shortcut thing. Key means if we want to know the details about that particular species, we have to see the original description. In key, generally there is fin formula is not there, entire description is not there. There are only the striking characteristics. Those are the opposite character that will generally we note down in the generating the keys. Okay.
Thank you, sir. So what we have to do? We have to read. हमको समझ Sorry. सर की को पढ़ेंगे कैसे, मतलब उसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे? अभी भी हमको समझ में तो नहीं आ रहा है। अभी भी तुमको समझ नहीं आ रहा है? Okay. बस See, like these are the keys. Okay. I will provide you this type of key. So many, there are so many genera, so many species is there, and so many family are there. According to that, we have to identify. First, we have to identify from one order to which family it will belong. For family identification, there are keys are there. This is the for family identification keys. Okay. After family identification, again we have to go. Suppose this one is one family called as Sylvidae. Okay. There one specimen has a dorsal fin absent, one specimen has dorsal fin present. If dorsal fin present, then we have to check the number 2. If dorsal fin absent, then we have to check the number 2. If it is present, we have to see number 3. Like that, accordingly, we have to identify. Suppose in 3, mouth small to moderate, its cleft not extending the front of eye. Then it is the genera Clupizoma. Again, we have to see in Clupizoma whether it is Clupizoma montana or Clupizoma garua. Like that, we have to identify an unknown specimen using key. Key means the shortcut way to identify a species. For reconfirmation, we have to read the original description, and after from key identification, suppose we have identified one specimen using the key, suppose it is Tenualosa hilsa. For reconfirming, we have to see all the main description. How many number of pectoral, how many number of pelvic, that is what is the total length, what is the standard length ratio, all those things. Again, we have to confirm. Okay. Clear? सर Yes, एक sir. क्वेश्चन है हाँ बोलो. सर जब तक डाउट होगा तब जैसे तक सर अच्छा है. वन के ए में इसमें कि उसमें? सर Whether सर this उसी में था सर उसमें practical था ना? ओके. हाँ. टेल. सर वन के ए में जैसे सर डॉर्सल फिन एब्सेंट लिखा हुआ है हाँ. सर ना, तो सर टू के ए सॉरी. सर जैसे वन के ए में लिखा हुआ है ना सर डॉर्सल फिन एब्सेंट, हाँ. और टू के और टू लिखा के डी में सर दिया हुआ है ना पेल्विक फिन प्रेजेंट, एनल फिन में दिए 275 हाँ हाँ हाँ. तो ऐसे लिखेंगे सर मेरा. One is dorsal fin absent or present. First thing 1A, 1B. First 1 में देखना होगा. 1 में क्या है? 1 में है dorsal fin present और dorsal fin absent. Sorry, again disconnected हो गया था. Okay. Now my voice is audible. Yes, sir. First, we have to see number 1, whether present or absent dorsal fin. If dorsal fin present, okay, we have to go to number 3. If it is absent, then we have to go to number 2. Suppose dorsal fin is absent, then we have to check whether pelvic fin also absent or pelvic fin present. It is for this specimen only. Okay. So dorsal fin absent means number 2. Number 2, there is 2 specimen. One is Ilia coela, one is Ilia punctata. Okay. In Ilia punctata, both dorsal and pelvic are absent. But in case of Ilia coelia, only dorsal is absent, but pelvic is present.
Here again also see, one have anal fin ratio is 58 to 75, another one is more than 75. Like that, we are identifying the specimens. Okay. Yes. Okay. Among dichotomous key, there are some other modifications. Okay. These are also the modifications of dichotomous key. The term is dichotomous. Okay. The other keys are bracket key, serial key, indented key, grouped key, combination key, branching key, circular key, box key, pictorial key, and multi-entry key. These are the other modification of the dichotomous key. Okay. Please note down. Shall I change? No, sir. सर हाँ. सर एवरी की देयर इज द ऑन फंक्शन होगा इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए समझ नहीं, रिपीट. सर जो ब्रैकेट की है इसका मतलब अलग होगा, मतलब इसको हम अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा. नो नो नो, हम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके बाद का जो अच्छा. स्लाइड्स है वो तुम्हें पहले मैं शेयर कर हाँ. दूंगा, फिर क्लास शुरू करेंगे. नेक्स्ट दिन पूरा कीज के बारे में अच्छा. डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे. सेम कैरेक्टर, ठीक है. हाँ सपोज सर. in box key there are the boxes. Okay. In indented Okay. key, Hmm. same thing, Hmm. same characteristics written is other fashion. Okay. In pictorial means Okay. there will be on picture designating the entire story. So pictorial key useful for non-fisheries person. Okay. Those are the non-fisheries person. Okay. Suppose they have to identify. हाँ. अगर हम लोगों को की से आइडेंटिफाई करना होता है नॉर्मल डायग्नोस की से, इट विल टेक मोर देन 2 hours, 3 hours, 5 hours, 10 hours इट विल टेक. ओके. बट अगर कोई नॉन प्रोफेशनल पर्सन होगा उसको आइडेंटिफाई करना होगा. अगर पिक्चर से डेजिग्नेट होगा, सपोज वन पिक्चर, वन इज डॉर्सल फिन प्रेजेंट, वन इज डॉर्सल फिन नो डॉर्सल. बाय टेकिंग द 2 photographs they can identify. These are the called as pictorial key. Circular key means one simple circle is there, their partition will be there. From there one by one we can see. Okay. Okay. These are suppose Okay, thank you. Same type of key. Okay, this I'm skipping. Same type of key written is another fashion, A, B, like that. Okay. Here also some other features will be there.
When you read the slides, you will understand. Then I will describe all those things. In branching means there are one simple branch like diagram like structure. Abdomen shorter or abdomen longer. If abdomen shorter, whether it is head with horn or head without horn. Okay. So it is also for non-professional person. Okay. These are the Okay. this is called branching key. In circular key also same characteristics. Abdomen shorter, abdomen longer. In abdomen shorter, there are two things: head with horn, head without horn. Same characteristics they have written in another fashion. Okay. Now you are getting. Okay. So मतलब method of ये सब method अलग अलग Like that. हम circle ये same circle thing को हम लोग जैसे अगर in depth करना होगा, that is called indented. This is, if the circular key is not suitable for more than 10 species or less species, it is more preferable. If one family contains more than 50 species, then we cannot use the circular key. Okay. Okay. These are the characters in box. Okay. These are different. Same thing for different times, different according to time and according to situation, we are changing the keys. Okay. They are the modification. Each are also dichotomous. Dichotomous means two contrasting characteristics. We have the modification for dichotomous key. Okay. First, I will share the presentation. You read. In next class, I will discuss each of the keys. कैसे डाइकोटोमस की को बनाते हैं और कौन कौन सा टाइप होता है. Yes, sir. See, this is the simple dichotomous key. Here, see the left side. Left side it is given as 1, 2, 3 serial number. In one, there is two portion A and B. These are contrasting. First one is body elongate, tail long. Second one is body moderately long, caudal forked. Their caudal is not forked. According to that, if caudal is long and tapering, then it is coilia. If it is normal, then we have to go to number 2. In 2 also, there is two options is there of 2A and 2B. Okay. Like that, it will go. This is called as simple dichotomous key. Clear? Right side, in the right side, there is. सर एक बार और बता दीजिए सर. Okay. In every portion, there is two options. Left side 1, 2, 3, 4 is there. Right side 2, 3, 4 is there. जी सर. हाँ. If in number 1, there is two options. One has tapering tail. That means caudal not forked, and another one is caudal forked. If caudal is tapering, then simply it is coilia. If caudal not tapering, then we have to go to number 2. In 2 again, see, there is two options is there, whether the silvery lateral line present or there is no silvery lateral line. Okay. If सर ये सर हाँ 2 के बाद ये कंटिन्यू है उसी में सर. अगर एक 1A नहीं है, that means 1B अगर मैच तुम्हारा सामने जो स्पेसिफिन होगा वो तुम्हें देखना होगा. 1A में मैच कर जा रहा है तो हो गया. अगर 1A में मैच नहीं कर रहा है तो B देखो 1B. अगर A और B में से सबको मैच करके देखना पड़ेगा. हाँ सर अगर जैसे अगर B भी नहीं मिला मैच किया तो नहीं B मिलेगा. जो की हम लोग बनाते हैं की को ऐसे ही बनाएंगे कि A और B में से किसी एक कैरेक्टर तुम्हें मिलेगा. इसीलिए की को बनाना होता है. जैसे दो कैरेक्टर है उससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ओके. ए और बी में से जो राइट साइड में, हाँ राइट साइड में ये दिया है कोयलिया वगैरह जो दिया है, ये सब एग्जांपल है इसका. दीज आर द नेम ऑफ द जीनस. ओके. सर ये फिल इन द ब्लैंक्स क्यों है इसमें सर? फिल इन द ब्लैंक्स नहीं. ऐसे अगर ए तुम्हारा मैच करता है तो तुम्हें 1A है दैट इज कोयलिया से डॉट 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 डॉट. इफ द बी इज मैचिंग
then you have to go to number 2. Okay, again अच्छा, मैच करने के बाद 2 पे जाना है। हाँ, मैच करने के बाद 2 में जाना है। अगेन 2 में देखो 2 ऑप्शन है, इसलिए इस की को बोलते हैं डाइकोटोमस। 2 ऑप्शन है, ऑलवेज इट हैज 2 ऑप्शंस। ओके, जी सर। 2 आर कॉन्ट्रास्टिंग। सी प्रोमिनेंट सिल्वरी लैटरल स्ट्रिप, दैट मींस लैटरल लाइन में तुम्हारा एक लाइन होगा, जो लैटरल स्ट्राइप होता है वो प्रेजेंट होगा और एब्सेंट होगा। सो दीज आर द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, whether it is present or absent. If present, it is some genera. Okay, here it is given as Stolophoros. If no lateral silvery stripe is present, then again we have to go to number 3. Okay, सेकंड का बिग एक और सर एक बार। नंबर 2 में भी 2 ऑप्शंस है। जी वेदर देखो, नंबर 2 में जो ऑप्शंस है उसके मतलब जो फर्स्ट है उस फिश का बॉडी मॉडरेट है, उसका कोडल फोर्क्ड है। नेक्स्ट जी क्या सर। आया, जैसे तुम्हारा बॉडी नॉर्मल और कॉर्डर फोर्क में बहुत सारा फिशेस है, उस फिश में कोई भी एक स्पेसिमेन का बॉडी में स्ट्राइप होगा, नहीं तो स्ट्राइप नहीं होगा। अगर स्ट्राइप होगा तो ये एक स्पेसिमेन होगा स्टोलेफोरस, अगर स्ट्राइप नहीं होगा तो मुझे 3 नंबर में जाना होगा। ऐसे करके हम लोग को 1 by 1 जैसे हम लोग मिस्ट्री, कोई भी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं ना, नंबर एक बॉक्स खुले, उसमें एक कोड मिला, उस कोड को देखे, उसके बाद नेक्स्ट कोड मिला, ऐसे करके हम लोग को फिश को आइडेंटिफिकेशन करना होता है। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। नहीं तो हम लोग को डिस्क्रिप्शन में पूरा उस फिश का डिस्क्रिप्शन पढ़ना होता है। जैसे हम लोग के पास अगर सपोज एक फिश को अगर आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ डिस्क्रिप्शन से अगर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो हम लोग को 10, 20, 30 बुक पढ़ना होगा, कौन सा बुक में कौन सा आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है, क्या क्या मीन्स, सारे स्पीसीज को पढ़ना होगा, इस स्पीसीज का ये है। और की से हम लोग क्या कैसे करेंगे, शॉर्टकट में इस की को पढ़ के हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके जी सर। अगर की नहीं रहेगा तो सारे जितना वर्ल्ड में 33,000 34,000 स्पीसीज है, सबका डिस्क्रिप्शन पढ़ना होगा, उससे भी हम लोग बहुत आइडेंटिफाई इजी नहीं कर पाएंगे। इतना कैरेक्टर है, कैसे मैच करेंगे, इसके साथ वो कैरेक्टर मैच हो जाएगा, 8-10 स्पीसीज का सेम कैरेक्टर होगा, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। इसलिए हम लोग की बनाते हैं। की ऐसे बनाते हैं जिसमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा, जैसे कि हम लोग धीरे धीरे स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, दिस इज द सिंपल डाइकोटोमस की। ओके सर। जो कैरेक्टर होगा उसके हिसाब से राइट साइड में तुम्हें देखो नंबरिंग है, उसके हिसाब से हमें जाना होता है। इसका भी बहुत सारा मॉडिफिकेशंस है। ओके एक हो गया तुम्हारा ब्रैकेट दिस ऑल आर द डाइकोटोमस की। ओके इसका भी बहुत सारा मॉडिफिकेशंस है, जैसे कि ब्रैकेट की, सीरियल की, इंडेंटेड की, ग्रुप्ड की, कॉम्बिनेशन की, ब्रांचिंग की, सर्कुलर की, बॉक्स की, and so on. Okay, these all are the dichotomous key with several modification only. Same thing with several modification. Okay, let's start one by one. This is the bracket key. Bracket key means in left side you will see after same like this is the best key among all other types. The key disadvantage is that the relationship of the divisions not clear. जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कभी कभी हम लोग बहुत इजीली हम लोग देख, इस की से हम लोग जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उतना क्लियरली विजिबल नहीं होता है। जब सबसे क्लियरली जो की से हम लोग को विजिबल होता है दैट इज इंडेंटेड की। ओके इस की से भी जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उतना क्लियरली विजिबल नहीं है। ओके जब इंडेंटेड की आएगा तब दिखाएंगे उससे और भी। इसमें देखो सेम कैरेक्टर, एब्डोमेन शॉर्टर देन थोरैक्स और एब्डोमेन लॉन्गर। इफ इट इज शॉर्टर then we have to go to number 2, if it is longer then we have to go to number 3. Again see in left side also 2 bracket 1, that means it came from number 1, that's why this key is known as bracket key. See in left side always given in bracket.
3 ब्रैकेट 1, दैट मीन्स जो 3 नंबर का जो सीरियल नंबर है वो तुम्हारा 1 से आया है। दैट मीन दिस फिश हैज एब्डोमेन शॉर्टर, ओके। नहीं, 3/1 मीन्स एब्डोमेन इज लॉन्गर देन thorax with spine. Here two things is there. One is abdomen is shorter, one is abdomen is longer. In shorter there is only two options, head with horn and head without horn. But in case of abdomen is longer, there is 4 option is there. Like that it is going on. In bracket key, always in left side along with number, the bracket is there. Suppose 3/1. 3/1 means abdomen is long. In case of normal dichotomous key, there is written only is 3. Okay, but here 3 bracket 1. In case of simple dichotomous, see, there is only 3, 4, 1, 2. But in case of, suppose if it is our bracket key, here it should be written like 3 bracket 2b, because it is came from 2b, na? See, clear? Yes, sir. Yes, Clear? sir. This is very basic. This is, that's why this key is called as bracket key. Next, that indented key. Indented key, here it is. ये A1, A2, A3 क्या है? कहाँ A1? A1, A2, A3, that is just Sir, right side में. generic name. In previous slides it was Stolophoros, Coelia, it is there, na? This is for only example. This is the generic name. Okay. सर एक बार फिर से बता दीजिए सर. This is the suppose A1 means you can say that this is Katla or Rohu. That is Lohu means Lebio, like that. सर तो This is the नाम generic. पहले से असाइन होगा उसमें. हाँ, नाम है. This is only because of example. So here is 6 specimen is there, na? A1, A2, A3, A4, A5 or A6. Here only 5 specimen details is given. Suppose तुम्हारे पास 5 specimen है, 5 specimen को इसमें की के जरिए रिप्रेजेंट किए हैं. 5 specimen को आइडेंटिफाई करने के लिए this is a key, where along with the number from which number it has came, this is given in bracket. Okay. Yes, sir. See here it is, this is very much easy to understand because there the contrasting characteristics are easily identifiable. That is, here it is anywhere A and double A, that means they are the contrasting. B and double B, that means they are the contrasting. See, there is 2 characters. Abdomen is shorter than thorax A and abdomen is longer than thorax double A. Okay, A and double A means they are the contrasting. Within A, 2 things is there, B and double B, that means they are the contrasting. So from left side, no need to go to number 2, number 3, number 4, number 5. From left side only you can easily see the contrasting characteristics. A and double A means A and double A are contrasting character. Among double A, see, again B and C is there. B and C are not contrasting. Okay. B and double B, these are the contrasting. C and double C, here also C and double C, they are contrasting. Clear? सर तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है तो साथ में होना चाहिए ना. कॉन्ट्रास्टिंग साथ में ही है ना, एक साथ दिए है. जैसे हम लोग इस की को देख के हम लोग इजीली देख सकते हैं A एंड डबल A. A के नीचे जो B एंड डबल B है, दे आर द कॉन्ट्रास्टिंग. अगेन B डबल A के अंदर में 2 थिंग है. Suppose this specimen has, one is shorter than thorax, one is longer than thorax. In longer than thorax abdomen, there is 2 condition is there. One has dorsal spine, one has no dorsal spine. B and double B. See again, in B and double B, there are
two contrasting character. Among B, there is two species is there. Among C, double B, there is two species is there. Like that, these keys are prepared. सर इसमें सीक्वेंस क्या होगा? इसमें सीक्वेंस नहीं, इसमें जस्ट ऐसे देखना होता है. जनरली एक की हम लोग नहीं बना पाते, क्योंकि अगर कम स्पीसीज होगा तो ये ठीक है. अगर ज्यादा स्पीसीज होगा, सपोज more than 100, more than 200, so you cannot prepare indented key. There only you can give is simple dichotomous key. Okay, whenever it is number of specimen is less, or in one family number of genera is less, there we can use this key. But these are not applicable where the number of specimens in a particular family is more. Here only 6 specimen is there, so it is easy. The best or the simplest is that the simple dichotomous key. Okay. A1, A2, A3 represent the specimen, sir. A1, A1, A2, these are the name of the genera or species. Okay. Okay. हेलो, Hello. आपने बोला वो A1, A2, A3 वो गिवन होगा, फिर तो ये इसका एग्जांपल जो जेनेरिक नेम आपने बोला ना, A1, A2 गिवन नहीं रहेगा. A1, A2 तुम खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे. यहाँ पे ऐसे A1, A2 लिखा है, इसलिए these are the A1, A2 की जगह पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं. तुम्हारे पास की रहेगा, उस की के हिसाब से तुम्हें फीचर मैच करना होगा. जो फीचर मैच करेगा उसके हिसाब से तुम्हें स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना होगा. This key will be given and specimen will be given. You have to match the specimen with the key and you have to identify the species. This is the main purpose. This is तो classical. A1 का कुछ नाम होगा, A2 का कुछ नाम होगा ऐसा? हाँ, suppose A3 means labio, A2 means katla, A2 means Sirenas. Okay. सर Yes. वो स्पीशीज है ना सर? हाँ, species इसका नहीं, मतलब कभी सर A1, A2 कभी जो स्पीशीज है सर? कभी कभी जेनरा होता है, कभी कभी स्पीसीज होता है. ओके. ओके सर. ऐसा नहीं कि ऑलवेज ए होगा. कभी कभी जेनरा होता है, कभी कभी स्पीसीज होता है. ओके. सुनवा दे. This is called as serial key. See here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 serial number is there. In case of there, first in bracket key, in right side you have to given the number, but in indented key there is right side there is no number, there is only generic or species name. Again in serial key, see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इस की को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? Suppose the contrasting characteristics here given in 1 bracket 4 and 4 bracket 1. These are the contrasting character. 2 bracket 3 and 3 bracket 2. These are the contrasting character. 6 bracket 7, 7 bracket C. These are the contrasting character. Okay. सर इसको एग्जांपल से समझा दीजिए. See, same species. नहीं समझ में. Same species. See, here it is given as abdomen is shorter than thorax. Among this, there is two options. Okay. Here see, abdomen is shorter than thorax. Here it is two options. But in this key, there is written as B and B double B. Here it is written as 2 bracket 3, 3 bracket 2. Clear? Yes sir. Same again, see here, abdomen is longer than thorax. Okay. It is given as 4 bracket 1. Next, thorax with spine, thorax without spine. See here also, thorax with spine, with dorsal spine, thorax without spine. Here it is B and double B. Here it is 5 bracket 8, 8 bracket 5. And left side serial number continue रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Okay. Yes, sir. Uh, See, this key is called as branching key. Start with the start portion. You have to see whether the abdomen is shorter than thorax or longer than thorax. If it is shorter than thorax, see here is two options is there: head without horn, head with horn. Okay. If it is head without horn, it is A3. So this key is very much easy to identify. See, it is very much easy, na, this key. Yes, sir. यस सर सबसे इजी तो यही है सबसे इजी है, बट Yes, sir. जी हाँ यही सर। बट हाँ सबसे इजी ये है, पर इसका जो डिसएडवांटेज है, ये तुम्हारा अगर स्पीशीज नंबर कम होगा तो तुम इस की को बना पाओगे। अगर तुम्हारे पास एक फैमिली में तुम्हारा स्पीशीज और जेनरा तुम्हारा 80 है, तो तुम कैसे ऐसे ट्री डायग्राम बनाओगे? तब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा बनाना। और ये जनरली हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, जो नॉन प्रोफेशनल पर्सन होता है उसके पास अगर ऐसा की रहेगा, उसको हम लोग ऐसे की प्रोवाइड करते हैं। ओके, जैसे कि ओके सर। बहुत बेसिक फीचर से वो लोग सेग्रीगेट कर पाए कौन सा क्या स्पीशीज है। और जिस फैमिली में जेनरा कम रहेगा उसमें ये एप्लीकेबल है। जहाँ पे बहुत सारा स्पीशीज होगा जिस फैमिली में, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है हुआ। ठीक है, सेम लाइक सर्कुलर की। सर्कुलर की सी shorter abdomen is shorter, abdomen is longer. Here it is also two option: head with horn, head without horn. In head with horn, see, head with one horn, head with two horn. Like that it is given. These are the pictorial form. Always pictorial form is easier to understood. कोई भी अगर हम लोग बुक पढ़ेंगे, बुक पढ़ने में हम लोग को जितना टाइम लगता है, एक मूवी अगर देखेंगे और कोई फिल्म देखेंगे उसी स्टोरी को लेके, हम लोग क्लियरली आइडेंटिटी, क्योंकि वो तुम्हारा पिक्चरल फॉर्म होता है और वो तुम्हारा ऑडियो विजुअल होता है। सेम इसका भी फंक्शन सेम है। हम लोग बाय विजुअली ऑब्जर्विंग, नॉट बाय रीडिंग, यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई द स्पीशीज। ओके, दीज आर द मेन things. Clear? Yes, sir. जनरली हम लोग जब यूज करेंगे तो हम लोग सिंपल डाइकोटोमस की को यूज करेंगे हमारा क्लासिफिकेशंस के लिए। दिस इज फॉर क्लासिकल टैक्सोनॉमी, दैट मींस these characters are given based on morphomeristic features. जो नया स्टूडेंट्स आए हैं उसको मॉर्फोमेरिस्टिक्स का नोट्स है तुम्हारे पास? No, sir. Sir, practical. अच्छा, आज प्रैक्टिकल Practical. मटेरियल, प्रैक्टिकल जो 6 प्रैक्टिकल हुआ है उसका भी मटेरियल शेयर कर दूंगा। ओके, हाँ सर, वो तो है, वो तो कर दिया वो। Morphomeristic means, morpho means what we can measure, meristic means what we can count. Okay, suppose number of fin ray 7, total length 15 centimeter, total 15 centimeters is morphological features. Number of ray 5, that means this is meristic counts. All the keys are based on morphomeristic feature. ओके, एक्सटर्नली हम लोग फिश का जो डिस्क्रिप्शन बनाते हैं उसके बेसिस से हम लोग इसको दिस कीज आर प्रिपेयर्ड। ओके, this is the box key. These all the box key, your circular key, next is your branching key. These all are for if the number of specimen is less. Here also abdomen is shorter than thorax, longer than thorax. Like that, in a box format we can prepare the keys. Okay, and the last one is multi-entry key. This key we are not using. These are mainly used for identification of plants. These are several cards are there. Window cards is there,
margin punched cards are there, tabular keys are there. By so many, by using the multi-entry key, we are identifying the plant specimens. Okay. Just remember. Okay, students. Thank you. If any question is there, then please ask. Otherwise, I will end today's class. Okay. Thank you. I am ending today's class.